अच्छा जी, so अस्सलाम वालेकुम and very good afternoon. ठीक है, आज for once में midday, exactly midday, 12 o'clock. So I hope by now, even though you are all, hopefully, you're wide awake, even though a bit exhausted after all, this is the third and the last lecture of the day. Anyway, आज इसको wind up करते हैं, इसको खत्म करते हैं. What was left out of the orbit of the eye were the nerves of the eye and vasculature of the eye. The nerves present inside the orbit, orbital cavity. ठीक है? Second, third, fourth cranial nerves, sixth cranial nerve. बात कर लेते हैं कि अब ऑप्टिक है. This is the second cranial nerve. ये सारा orbit है. This is the orbit, and this is the superior orbital fissure. Okay. So this is the second cranial nerve. This is the third, the superior branch of the third, the inferior branch of the third, oculomotor nerve. Okay. The fourth cranial nerve is the trochlear nerve. Here. Abhi oculomotor nerve. This is the oculomotor nerve. This is the ophthalmic nerve. इसकी भी अभी हम बाल आ जाते हैं. This is the fourth cranial nerve. ठीक है, trochlear. And sixth cranial nerve ये है abducent. ये abducent. And then you have the fifth cranial nerve as well. 58th branch that is in the orbit, and this is the branch of the fifth cranial nerve. Trigeminal की ये ophthalmic branch है. Ophthalmic branch of the trigeminal is for the supply, is present inside the orbit and supply आपको पता है. अच्छा, we've already done the ophthalmic nerve in detail. लेकिन आज मैं एक quick recap I will give you. ठीक है, so अब इसकी जो branches हमारे पास है, that is the lacrimal, this one. ठीक है, frontal over here, ये frontal है, and then we have the nasociliary जो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा. So I repeat once again, you have the optic nerve, the second cranial nerve. You have the oculomotor, the two branches of the oculomotor, third cranial nerve, superior branch, inferior branch inside the orbit, third cranial nerve. Then you have the fourth cranial nerve, which is the trochlear. Here, sorry, this is the trochlear nerve. Then you have the sixth cranial nerve. This is the abducent nerve, the sixth cranial nerve, and of course, you also have the fifth cranial nerve, the ophthalmic branch of the fifth cranial nerve. This is the ophthalmic branch. This is the trigeminal ganglion, the trigeminal nerve, the trigeminal ganglion. Uski first branch, the first branch of the trigeminal nerve, fifth cranial nerve, is the ophthalmic. This is also present in the eye. This is the frontal branch of the ophthalmic, and this is the lacrimal branch of the ophthalmic. Let's go over them one by one. अब इनमें से we've already done the optic in detail, oculomotor, trochlear, and abducent. We've done all of them in our previous lecture. We've done ophthalmic as well in the previous lecture. इस lecture के शुरू में भी, in fact इस lecture के शुरू में हमने ये किया था, sorry lecture में इस substage के शुरू में हमने ophthalmic nerve की थी, but I will repeat the ophthalmic nerve because I know most of you, you've already done the ophthalmic nerve. So, but I will repeat it for you people. Ophthalmic nerve, first division of trigeminal nerve, fifth cranial nerve की first division है ophthalmic nerve.
ये ठीक है जी अच्छा जी this happens to be the smallest branch of the trigeminal nerve the first and the smallest branch runs along the lateral wall of the orbit मैं अब इसकी बात कर रही हूँ lacrimal nerve ये है ठीक है so I'm talking about the lacrimal nerve this is the smallest branch lacrimal से आपको अंदाजा हो गया होगा it is for the supply of the lacrimal gland ठीक है जी so this lacrimal nerve runs along the lateral wall of the orbit it receives secretomotor branch a branch from the maxillary की zygomatic-temporal ये maxillary nerve है बेटा second branch of trigeminal nerve. The maxillary nerve gives off a branch which is the zygomatic nerve. Zygomatic nerve divides into two, the zygomatico-temporal and the zygomatico-facial. ये आपको पता है zygomatico-temporal ये है. The zygomatico-temporal gives a communicating branch to the lacrimal nerve, which is the branch of ophthalmic division of trigeminal. ठीक है ये जो communicating branch है between from the zygomatico-temporal to the lacrimal ये जो communicating branch है this conveys secretomotor fibers to the lacrimal nerve. Secretomotor means it supplies the lacrimal gland. ठीक है अब इसकी distribution क्या है what does it supply? It supplies the lacrimal gland उसका नाम भी lacrimal nerve supplies the lacrimal gland. It also obviously secretomotor fibers देती है. It supplies this यहाँ देख लीजिए skin of the and upper eyelid की skin lateral side पे plus जो conjunctiva है lateral side पे जो eyelid को line करता है conjunctiva palpebral conjunctiva जिनको कहते हैं upper eyelid की वो उसको supply करता है. Actually, oculomotor oculomotor nerve नहीं है ophthalmic nerve है. I'm sorry. यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ oculomotor nerve नहीं है ये. अच्छा जी ophthalmic nerve की second branch जो है that is frontal nerve. ठीक है ये frontal nerve. This frontal nerve यहाँ पे this is the frontal nerve ठीक है runs ये this is the largest branch of the ophthalmic frontal nerve जो है which is the largest branch of ophthalmic nerve बेटा ये oculomotor नहीं है I'm sorry about this mistake ठीक है runs along the roof of the orbit ये देख लीजिए and then at the margin of the orbit over here, it divides into two, the supratrochlear so medially it is the actually so the frontal nerve gives two branches medially it is the supratrochlear laterally it is the supraorbital अब इनकी distribution क्या है ये medially this is the supratrochlear अब इसमें जो चीज आपको clear करनी है वो ये supratrochlear is the medial supplies starting from here supplies this medial part of the conjunctiva lining the upper eyelid and forehead just the forehead up to the hairline or where it should be ठीक है यहाँ तक ये आगे नहीं है this is a wrong depiction
यहाँ तक जहाँ तक ये एरो है, where the hairline is, जहाँ से बाल शुरू होते हैं वहाँ तक ये supratrochlear है. And then laterally this lighter blue, this is supraorbital. Supraorbital जो है ये आपके frontal sinus को supply करती है. The middle part of the superior eyelid, upper eyelid के middle वाला part, क्योंकि lateral part अभी हमने lacrimal से supply करवाया है. ठीक है. Forehead up to the vertex. Vertex आपको बताया था the highest point on the skull over there. So up to here, यहाँ तक supratrochlear ने किया था. ये हिस्सा रह गया था. This is supplied by the supraorbital. And then we have the nasociliary branch. Nasociliary branch immediately divides into ethmoidal branches, anterior and posterior ethmoidal branches. जो anterior ethmoidal branch है, that उसकी terminal branch आगे से ये external nasal है ये, ठीक है. और जो infratrochlear इसकी branch है, वो terminal branch of the nasociliary जो है, that is the infratrochlear ये. Okay. So ये anterior ethmoidal की terminal branch है, जो कि which is a branch of nasociliary, and this is a branch of infratrochlear, is a terminal branch of the nasociliary. ठीक है. अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की. इंफ्राट्रॉक्लेयर की बात कर लेते हैं बेटा. दिस इज द इंफ्राट्रॉक्लेयर नाउ. ये root of the nose. This is the root of the nose. Yeah, this is the root of the nose, so it supplies the root of the nose. Skin and conjunctiva of the ये medial canthus है. Skin and conjunctiva over the medial canthus. और यहाँ पे आपको पता है, you have the lacrimal sac, which also supplies the lacrimal sac. So I repeat once again. ये lateral part of the root of the nose is cystic. Skin and conjunctiva, medial canthus, ये medial canthus of the eye, skin and conjunctiva of the medial canthus, and then you, over here you also have the lacrimal sac, so it also supplies the lacrimal sac. External nasal ये है, ठीक है. Skin of the ala and vestibule. Ala आपको पता है, the you don't know ala. Ala is the dilated part of the nose. ये vestibule is the inside of the nose. Okay. Then tip of the nose up to the this सारा, all this part ये up to here, ये सारा external nasal. नाम ही उसका nasal है, so nose को supply करेगी. Skin of the ala होगा, skin of the vestibule होगा, ठीक है. Skin of the ala, skin of the vestibule, dorsum tip से लेके यहाँ तक ऊपर का part जो है वो इंफ्राट्रॉक्लेयर में यहाँ पे supply करती है. Is this clear? Any questions? नहीं है questions. Okay, fine. Let's come to the ciliary ganglion. Ciliary ganglion is one of the parasympathetic ganglia of the little nail. We've already done 2 parasympathetic ganglia. We've done the otic ganglion. The otic ganglia was for the supply of carotid gland. Then we did the pterygopalatine ganglion. Pterygopalatine ganglion, आपको पता है, palate को करता है, glands जो है, basically ये glands of the palate को करेगा, mouth cavity. अच्छा जी. So, and ciliary ganglion is lying inside the orbit. It is for the supply of the structures inside the orbit. अब कहाँ पड़ा हुआ है? ये है ciliary ganglion. This is the ciliary ganglion. ये lying on the optic nerve. ये the lateral rectus muscle है, ठीक है. This lateral rectus muscle, ये lateral rectus का cut end है. So lateral rectus is lying over here. यहाँ तो इसको artificially separate out किया हुआ है ना. So lateral rectus is lying like this.
So this ciliary ganglion is lying between the optic nerve and the lateral rectus muscle. It is present in the posterior part of the orbit. ठीक है? अब आपको बताया था कि these parasympathetic ganglia, they have a sensory root, um, sympathetic root, a sensory root, and a parasympathetic. So sympathetic, parasympathetic, and sensory root. ठीक है? Sensory root यहाँ पे जो है ना, this comes, ये sensory root है बेटा. This comes from the nasociliary. Nasociliary nerve provides sensory fibers to the ganglion. ये जो sensory fibers हैं, they pass through the ciliary ganglion but do not relay in the ganglion. ठीक है? Remember, it's a parasympathetic ganglion. So सिर्फ parasympathetic fibers इसमें relay करेंगे. बाकी सब fibers, the sensory and the sympathetic, yes, they pass through the ganglion, but they do not relay because this is basically parasympathetic ganglion. Okay? अच्छा जी, parasympathetic जो है fibers, ये देखो, pass through the oculomotor nerve. They are carried with the oculomotor nerve, उसकी inferior division of the oculomotor nerve. वहाँ से they are passed into the nerve to inferior oblique. ये हम पहले ही कर चुके हैं. Nerve to the inferior obliques, they pass forwards, they leave the nerve to the inferior oblique, enter the ganglion. Since they are parasympathetic fibers, they relay in the ganglion. Post-ganglionic fibers, they then pass via these short ciliary nerve, they pass to the sphincter pupillae muscle, ye sphincter pupillae, and ciliary muscles, ciliaris जिसको कहते हैं. ये sphincter pupillae आपको पता ही है, it is one of the and ciliary muscles, ciliary body का जो muscle है. So sphincter pupillae and ciliaris muscle या ciliary muscle, these are one of the intraocular या intrinsic muscles. बेटा ये दोनों terms use की जाती हैं. The more favorite term used by your examiners, by your teachers generally, is the intraocular. In contrast to the extraocular वो muscles आपको पता नहीं. These sphincter pupillae, dilator pupillae, and ciliary muscles, ये intraocular muscles हैं. They are muscles inside the eye. ठीक है? ये recti जो है ना बेटा, ये तो extraocular है ना, ये outside the eye. ये जो sphincter pupillae, dilator pupillae, और ciliary muscles, ciliary, they are intraocular. They are also, आपकी बुक में इनको intrinsic muscles लिखा हुआ है. ठीक है? That is fine. आप intraocular कह ले या intrinsic कह ले, it's the same thing. I just wanted to clarify this thing कि यहाँ पे आपको दोनों terms मिलेगी and दोनों terms correct हैं. क्योंकि American books इनको intrinsic muscles लिखती हैं और British books इनको intraocular muscles लिखती हैं. पता नहीं आपका examiner क्या पसंद करेगी. अच्छा जी, अब sympathetic fibers पे आ जाते हैं. Sympathetic fibers are fibers that come from the superior cervical ganglion. They make a plexus around the internal carotid artery, and then these fibers are carried to the ganglion. They pass through the ganglion, do not relay in the ganglion, pass through the short ciliary nerves, and go and supply the dilated muscle. बेटा ये जो short ciliary nerves हैं, इनके through parasympathetic fibers भी pass करते हैं, इनके through sympathetic fibers भी pass करते हैं, और sensory fibers भी pass करते हैं. ठीक है? So short ciliary nerves convey all three types of sensations. मैं एक दफा फिर repeat कर देती हूँ इनको. Input जो है into the incoming fibers to the ciliary ganglion. Parasympathetic fibers जो हैं,
they pass through the oculomotor nerve, inferior division of the oculomotor nerve. Inferior division में से branch arise करती है to the inferior oblique. ये parasympathetic fibers pass through the pass with the nerve to the inferior oblique. Then they leave the nerve to the inferior oblique, enter the ganglion, relay in the ganglion, and then postganglionic fibers go and supply the short ciliary nerves and pass through the short ciliary nerves and go and supply the sphinctopupillary and ciliary muscles. Okay? Then come your sensory fibers. Sensory fibers pass through the ophthalmic division of the trigeminal nerve. उसके थ्रू उसकी nasociliary branch में travel करते हैं. So ophthalmic division से nasociliary में आए, nasociliary से they pass through the ganglion, and ganglion में they do not relay, they just pass forward and supply. अभी बता दिए कि इसकी nasociliary की supply क्या है. And then you have sympathetic fibers. Superior cervical ganglion से postganglionic sympathetic fibers make a plexus around the internal carotid artery. यहाँ से यही postganglionic fibers pass through the ciliary ganglion, do not relay in the ganglion, pass through the short ciliary nerves and go and supply the dilated pupil. So in other words, the short ciliary nerve, it carries all types of fibers. Sympathetic, parasympathetic and sensory fibers. ये short ciliary nerves हैं. अच्छा जी, इसी को ही हम दोबारा एक दफा देख लेते हैं. शॉर्ट सिलिरी की हम बात कर रहे थे. ये शॉर्ट सिलिरी नर्व्स हैं. सेंसरी फाइबर्स इसको नेजोसिलरी से आ रही हैं. पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम द रिंगर रेस्ट वाल्व से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो हैं they go and relay in the ciliary ganglion, ठीक है, and then pass through the short ciliary nerves and supply the sphinctopupilli. ये देख लीजिए. पैरासिम्पैथेटिक, सॉरी, ब्लू में थे, रिले किया सिलियरी गैंग्लियन में. पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ये येलो में है, पासिंग थ्रू द शॉर्ट सिलियरी नर्व्स, गो एंड सप्लाई. ये येलो को देखिए, गो एंड सप्लाई द मसल्स ऑफ द आइरिस एंड सिलियरी बॉडी. स्फिंक्टोपिपिली और ये, ठीक है. अच्छा जी. And then you have the sympathetic root, forms a plexus around the internal carotid. वहाँ से the nerve arises, passes through the ciliary ganglion without relay. Sympathetic root ये देख लीजिए red में, post ganglionic sympathetic, post synaptic sympathetic root है. ये red को follow करते जाएं. This is for the supply of intraocular blood vessels. Sympathetic जो हुआ तो intraocular blood vessels, plus they also go and supply the ये जो muscle है. अच्छा जी, अब long ciliary nerves पे आ जाते हैं. ये long ciliary nerves है, sensory fibers, ठीक है. ये nasociliary के थ्रू ट्रैवल करते हैं. ब्रांच ये जो carries sympathetic, carries sensory fibers passing through the long ciliary nerve, ठीक है. ये जो है post ganglionic fibers जो है ये इनके थ्रू post ganglionic sympathetic nerve fibers. So अब post ganglionic sympathetic fibers जो long ciliary के थ्रू जा रहे हैं, they go and supply the dilator pupilli. और यहाँ पे post ganglionic
sympathetic fibers जो short ciliary के through जा रहे हैं, they go and supply intraocular blood vessels. उसके अलावा you have anterior and posterior ethmoidal nerves. ये go and they go and supply ethmoidal and sphenoidal sinuses, nasal cavity, and dura mater of the anterior cranial fossa. Okay? So basically, I wanted to tell you about the long ciliary. The long ciliary may say it branches off from the nasal ciliary. It carries sensory fibers to the eyeball, conjunctiva, and cornea को supply करती है. Plus, it also carries sympathetic postganglionic fibers that go and supply the dilator pupils. समझ आई है? Do you have any questions before we start with the arteries of the orbit? Any questions, beta? Anybody who was listening? G, beta. बेटे क्या repeat कर दूं? Ciliary ganglion. Oh, fine. I'll just repeat it in a minute. बेटा ciliary ganglion, I just told you, is a parasympathetic ganglion. ठीक है? आपको मैंने बताया था in the beginning. Head and neck में we have 4 parasympathetic ganglia. Otic ganglia for the supply of parotid gland, हम कर चुके हैं. Pterygopalatine ganglia. Then we have ciliary ganglion. Ciliary ganglion is lying inside the orbit. Ciliary ganglion is for the supply of the eye structures inside the orbit. And चौथा जो है वो submandibular ganglion है, जो कि आपके salivary glands के दो रह गए हैं, submandibular and sublingual gland की supply के लिए है. ठीक है? So we have 4. You have 4 ganglia. अब today we do the ciliary ganglion. ठीक है? So अब इसकी लोकेशन अभी आपको बताएगी. Resting on the optic nerve. This is the optic nerve. This is the lateral rectus muscle. This is the cut end of the lateral rectus muscle. This muscle is lying like this. It has been artificially separated. ये देख लीजिए lateral rectus. ये purple है, ये nerve to the lateral rectus है, abducens cranial nerve, abducens nerve. So this lies over here. So the ciliary ganglion is sandwiched between the optic nerve and the lateral rectus muscle. अच्छा, इसके connections आपको बताया था. हर parasympathetic ganglion of the head and neck, all 4 of them, ठीक है? उनका एक motor input होता है incoming fibers में, parasympathetic input होता है, sympathetic input होता है और sensory input होता है. ठीक है? So incoming fibers में you have parasympathetic, you have sympathetic, and you have sensory fibers coming to the ganglion. Out of the 3 types of fibers, अभी ये चूंकि parasympathetic ganglion है, so only the parasympathetic fibers coming to this ganglion will relay in the ganglion. बाकी जो 2 type की fibers हैं, that is sympathetic fibers coming to the ganglion and sensory fibers coming to the ganglion. ये दोनों किस्म की fibers, they pass through the ganglion without relaying in the ganglion. ये एक basic जो है ना concept of all parasympathetic ganglia मैं आपको पहले भी repeat कर चुकी हूँ, जब मैंने आपको ओटिक पढ़ाया था और जब मैंने आपको टेरिगोपैलेटाइन पढ़ाया था. ठीक है? अच्छा, अब बताने वाली बात ये है कि इसमें जो sensory fibers हैं, sensory fibers,
they simply, this is the trigeminal ganglion, this is the trigeminal nerve. The sensory fibers are coming via the trigeminal nerve. They pass through the trigeminal ganglion, or then they pass into the ophthalmic division, first division of the trigeminal nerve. Ophthalmic division की अभी हमने बात की कि एक ब्रांच है नेजोसिलरी. So ये sensory fibers ophthalmic nerve से नेजोसिलरी में पास किए, ठीक है, and then they go and supply the eye, parts of the eye. आपको पता है कंजंक्टिवा को भी सप्लाई करती है, कॉर्निया को सप्लाई करती है इसकी ब्रांचेस, प्लस अभी जो हमने इसकी ब्रांचेस इन डिटेल डिस्कस की, ठीक है. अच्छा, देन कम्स द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स. अभी चूंकि पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है, तो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स इसमें रिलेट करेंगे. ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स पास कैसे करते हैं? पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स they pass through, this is the third cranial nerve. इसकी दो divisions है, superior and inferior. These parasympathetic fibers pass through the inferior division of the oculomotor nerve, third cranial nerve, inferior branch जो है उसमें से. Inferior branch की आगे से फिर जो branch है, in nerve to the inferior oblique, क्योंकि inferior division से supply होते हैं medial rectus, inferior rectus, inferior oblique. So जो nerve to the inferior oblique है, इससे fibers जो हैं, they go to the ciliary ganglion. They relay in the ciliary ganglion, and then postganglionic fibers go and supply the sphincter pupillae and ciliaris muscle. ठीक है. अब तीसरी किस्म के फाइबर्स सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं. ये सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में रिले करते हैं, and they then postganglionic fibers, they form a plexus around the internal carotid artery. वहां से the nerve arises, passes through the ganglion, and then pass into the short ciliary nerve. Of all three fibers, parasympathetic, sensory, and sympathetic, they are all run into the, together they make up the short ciliary nerve. ये जो sympathetic fibers है ना, ये पास तो करते हैं short ciliary nerves में से, लेकिन ये sympathetic fibers जो हैं, they go and supply the blood vessels, plus यहाँ से ये blood vessels को supply करते हैं. They are for the supply of the blood vessels. So short ciliary में से तीनों किस्म के fibers पास कर रहे हैं. ये ट्राइजेमिनल में से सेंसरी फाइबर्स आ रहे हैं, ठीक है, और ये पास करते हैं इनटू द नेजोसिलरी. ये देख लीजिए, नेजोसिलरी नर्व्स में से पास करते हैं into the, pass through the ganglion but do not relay in the ganglion, then pass into the eye. यहाँ पे आप इनकी आप डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए. जो सेंसरी फाइबर्स ये नेजोसिलरी नर्व के थ्रू आ रहे हैं, they make up the long ciliary nerve, ठीक है. और ये जो long ciliary nerve से sympathetic fibers, mesociliary general sensation की जो fibers sensory into the long ciliary, ये go and supply general sensations to the eye. अब कुछ फाइबर्स जो हैं वो पोस्ट गैंग्लियोनिक, अब मैं लॉन्ग सिलियरी नर्व की बात कर रही हूँ. इसमें लॉन्ग सिलियरी नर्व में कुछ फाइबर्स तो वो हैं जो कि जनरल सेंसेशंस कैरी कर रही हैं. कुछ ये रेड वाले फाइबर्स हैं, दे आर पोस्ट सिनेप्टिक सिंपैथेटिक फाइबर्स. ये fibers, they go and supply the
dilator pupillary muscle. ठीक है. सिंपैथेटिक रूट की बात करें, दूसरे जो सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं, रेड को फॉलो करें. एक रेड में यहाँ भी है सिंपैथेटिक, जो कि शॉर्ट सिलरी के थ्रू पास कर रहे हैं. जो शॉर्ट सिलरी के थ्रू पास करेंगे, दे आर फॉर द सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ द आई, इंट्राओक्यूलर ब्लड वेसल्स. लेकिन सिंपैथेटिक के जो फाइबर्स लॉन्ग सिलरी के थ्रू पास करेंगे, they go and supply the dilator pupillary. ठीक है, सो dilator pupillary को sympathetic supply है. ठीक, जबकि आपकी sphincter pupillary को parasympathetic supply है. Sympathetic sphincter pupillary and ciliary body, ciliary muscles inside the ciliary body. Both of them are supplied by parasympathetic fibers. और पास उसी तरह ही होते हैं ये through the short ciliary nerve. आप बताओ, समझ आया? Now is everything okay? Okay then, if everything is okay, I move ahead. Okay, you're welcome, my dear. You're always welcome. अच्छा जी, अब orbit की पहले arteries हम कर लें. The main artery of the orbit is the ophthalmic. ये ophthalmic artery है. This one. Ophthalmic artery is a branch of internal carotid. Internal carotid आपको पता है, internal carotid was lying inside the cavernous sinus. ठीक है, वहां से ophthalmic artery arise करती है. That is the main artery of the orbit. उसके अलावा intraorbital भी enter करती है into the orbit. Intraorbital is a branch of the third part of maxillary artery. This supplies the floor of the orbit. And then don't forget, सबसे important, the most important blood vessel, the most important artery is the central artery of the retina. Okay. Central artery of the retina arises from the ophthalmic. Okay. It runs inferior to the retina to begin with, and then it pierces the coverings of the meningeal layers of the optic nerve and enters into the center of the optic nerves, run in the center of the optic nerve. बेटा ये देख लें आप, it is running right through the center. ये yellow में सारी optic nerve है, and the central artery and vein of the retina are running right through the center of the optic nerve. ठीक है, at the optic disc, inside the eyeball, over the surface of the retina. At the optic disc, it divides into multiple branches, and they then supply the internal surface of the retina. ये देख लीजिए, ये red जो है, these are the arteries. ये देख लीजिए, सारे अंदर multiple branches हैं. They all supply the internal surface of the retina. एक बात मत भूलिए, please always remember, the central artery of the retina is an end artery. It's an end artery. The branches be there, end arteries. Any thrombus, any blockage in the central artery of the retina will end up in blindness. अंधा हो जाता है इंसान. So one has to be very careful. So central artery of the retina, if a thrombus is present inside the central artery of the retina, then this leads to blindness, because retina के nerve supply जब खत्म हो जाएगी तो vision is lost. Continuing with the
arteries supplying the eye. So inside of the retina आपको बता रही है central artery of the retina. ठीक है? ये. Up, outside of the retina. Outside of the retina, you all know the retina is in contact with the inner surface of the choroid layer. और choroid तो सारा है ही, blood vessels. It is made up of blood vessels. So the choroid external surface of the retina is supplied by the capillaries that make up the choroid, choroidal blood vessels. Okay? Then posterior aspect पे you have about 8 ciliary arteries, posterior ciliary arteries. Okay? Out of these 8, you have 6 short ciliary, short posterior ciliary, and 2 long posterior ciliary. ये जो 6 short posterior ciliary हैं, these ये they supply the choroid. ये जो choroid की layer है, इसको supply करती है, and obviously choroid को करती है तो outer layer of the retina, outer non-vascular layer of the retina को भी supply करती है. Inner को हमने already central artery of the retina की branches से supply कर दिया, inner part surface of the retina. अब आ जाते हैं long posterior ciliary. ये long posterior ciliary, ये जो है 2 हैं, right and left. There's one over here as well. ठीक है, यहाँ पे right and left. You have 2 long posterior ciliary. These long posterior ciliary are sandwiched between the choroid and sclera. ये sclera है, ठीक है. Between ये choroid है, so between the choroid and sclera, ये जो है ना, ये these are the long posterior ciliary arteries between the sclera and choroid. अब ये जो long posterior ciliary artery है, they run anteriorly and they anastomose with the anterior ciliary arteries. अब ये anterior ciliary arteries क्या है? ये simply muscular जो arteries है ना, ये उनकी आगे से टर्मिनल ब्रांचेस है, और ये मस्कुलर आर्टरीज कहीं से भी नहीं, ये भी ऑप्थेल्मिक की ब्रांच है. ये सिलियरी प्लेक्सस यहाँ पे बनता है, ठीक है. ये एंटीरियर सिलियरी वेसल्स है सारी, इधर सिलियरी प्लेक्सस बनेगा. उन सिलियरी प्लेक्सस में से एंटीरियर सिलियरी आर्टरीज सप्लाई करती है, अराइज करती हैं, और ये मस्कुलर ब्रांचेस है ऑफ द, यहाँ ये देखो मसल्स को सप्लाई करती है, मस्कुलर ब्रांचेस. इन मस्कुलर ब्रांचेस से ये एंटीरियर सिलियरी अराइज करती है, और ये एंटीरियर सिलियरी जो है ये आगे जाके लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी से एनास्टोमोस करती है. मैं फिर रिपीट कर देती हूँ. ये लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी है, ये which is lying between the sclera and the choroid. It runs forwards, anastomoses with the anterior ciliary. Anterior ciliary बताती हूँ, ये मसल्स हैं of the extraocular muscles, इनको सप्लाई करती है ophthalmic artery. ये मसल्स से anterior ciliary arise करती है, and this anterior ciliary anteriorly goes and anastomoses with this long posterior ciliary. Is this thing clear? Any question? I guess not. Okay जी, veins पे आ जाते हैं. आप पहले भी हम कर चुके हैं, ये बहुत दफा कर चुके हैं. Superior ophthalmic vein, inferior ophthalmic vein, ठीक है. They both pass through the superior orbital fissure and end in the cavernous sinus. यहाँ पे cavernous sinus है, ठीक है. And then don't forget the central vein of the retina. अगर central artery है तो central vein भी है. Central vein of the retina, this either goes directly into the cavernous sinus या फिर it joins the ophthalmic veins and
उनके थ्रू कवर्नस साइनस में चली जाती है. एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव वेनी वाटरकोज वेन्स. अब ये जो आपका फ्लोराइड लेयर है, जो वास्कुलर लेयर है, उसको ड्रेन करती है ये. ठीक है. एंड दे गो एंड जॉइन inferior ophthalmic vein. ये varicose veins है, they are joining the inferior ophthalmic vein. ये varicose veins choroid layer of the eyeball, middle layer of the eyeball से आती है. अच्छा जी, अब इससे पहले कि हम उसको खत्म करें, this is something very important. Papillary edema क्या होता है? ये देख लीजिए, ये ऑप्टिक डिस्क है, आप पढ़ चुके हो. ऑप्टिक डिस्क है, वेरी क्लियर मार्जिन्स. ये सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना की branches हैं. And of course, central artery of retina obviously will be accompanied by central vein of the retina. Don't forget that. ठीक है. अब ये जो ऑप्टिक नर्व है, इसके सेंटर में ये सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना रन कर रही है. And the optic nerve, you all know, is surrounded by the three meninges: the pia mater, the arachnoid mater, and the dura mater. And between the pia and the arachnoid, you have subarachnoid space, in which is present cerebrospinal fluid. If the CSF pressure rises for any reason, say head injury हो गई, कोई problem हो गया, if the CSF pressure rises, तो ये जो venous return होता है on the eye, ये slow down कर जाता है. देखो बेटा, इसके थ्रू सेंट्रल आर्टरी और सेंट्रल वेन ऑफ द रेटिना रन कर रही है. सेंट्रल आर्टरी ऑफ द रेटिना सीएसएफ प्रेशर से इतनी इफेक्ट नहीं होती, बिकॉज आर्टरी है ना, मस्कुलर वॉल है उसकी. वेन में तो मसल होता नहीं है, सो आर्टरी कंप्रेस नहीं होती इतनी आराम से, जबकि वेन बड़ी जल्दी कंप्रेस हो जाती है. अब रिजल्ट क्या है? ब्लड इज कमिंग इनटू द retina but cannot go out of the retina because the central vein of the retina जो है compress हुई हुई है. With the result, blood stays inside the retina. Retina goes on swelling up. Optic disc यहाँ पे है, optic disc भी swell कर जाती है. Normally बिल्कुल flat होती है, जब swell कर जाती है, फूल जाती है, cupping of the optic disc हो जाता है. And then this is what happens because of swelling. ये जो normal clear margins of the optic disc, this is what it becomes: blurred margins. Margins clearly नजर ही नहीं आते. ठीक है. This condition is called papilledema. ठीक है. subarachnoid space में CSF का प्रेशर राइज किया है, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न स्लो डाउन कर गई और फ्लूइड अक्यूमुलेट हुआ इन द रेटिना. इज दिस थिंग क्लियर बेटा? अभी तक इस पैपिलोएडेमा पे और एनीथिंग, ब्लड वेसल्स, वास्कुलेचर पे, डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? बिकॉज इसके बाद अब एक दो स्लाइड्स और एंड देन वी वाइंड अप. Okay, fine. Thank you, Gohar. You don't have any questions. God bless you, my dear. अच्छा जी. So this was in fact the last slide. क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर central artery of retina, if that is blocked, it ends up in complete blindness. लेकिन if the central vein of the retina is blocked for any reason, तो फिर ये fluid accumulate होता जा रहा है ना. अगर ये relieve नहीं करेंगे इस pressure को and venous return is not restored, उसका result ये होगा, it is going to be slow blindness gradually because of raised pressure.
lack of venous return, fluid accumulates inside the retina, और इसकी pressure की वजह से जो neurons हैं, they get compressed and they then degenerate. Prolonged window. ठीक है बच्चे? So this is what happens. Central vein of the retina में slowly blindness develop करती है, जबकि central artery of the retina की blockage में एकदम से sudden blindness, क्योंकि blood supply आनी बंद हो गई है एकदम से. Okay. Anything you want me to repeat? Anything you want me to repeat? I don't think so. Okay, then you have a substage coming up on Tuesday. And I think just one lecture left. नहीं, gross का कोई lecture नहीं, gross का ये last lecture. So, I wish you best of luck for your substage. And I don't suppose we have any questions. इस पूरी substage के बारे में I hope you remember the syllabus, pterygoparietal fossa से maxillary nerve and then the entire eye. ठीक है बेटा? Maxillary nerve भी है, ophthalmic nerve भी है, दोनों nerves हैं. So trigeminal की दो divisions यहाँ cover हो जाएंगे, maxillary भी और ophthalmic भी. And then don't forget second, third, fourth, sixth, fifth की दो divisions. हमने सिर्फ mandibular है जो previous substage में हमने की थी. And you have the entire eyeball, orbit की boundaries, everything. All this is included in your substage. So इस सारे में से if you have any questions anywhere, तो मुझे बता दीजिए. No, I don't suppose there are any questions. Good. That means that you understood everything. I'm very happy. I'm very glad कि आपको ये सब समझ आ गया. हाँ, don't forget your dural venous sinuses. इसमें dural venous sinuses भी हैं, इसमें meninges भी हैं, और इसमें infoldings भी हैं, meninges, dura की, ये सब plexuses भी हैं. So this is a very important sinus, the cavernous sinus. ये भी include है इसमें. ठीक है जी, I'm just running through the entire syllabus of this substage. Maxillary nerve, pterygopalatine ganglia, ठीक है. ये जनरल लेआउट बताया था पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया. Maxillary artery, उसकी branches, उसकी third part जो pterygopalatine fossa में आता है, that part of the maxillary artery, उसकी branches हमने की थी सारी.
And then don't forget your pterygopalatine fossa की boundaries, contents, जो openings इसमें हैं. ठीक है जी. So this is your syllabus for the second substage. I've just gone through the entire syllabus. Pterygopalatine fossa, pterygopalatine part of the maxillary artery, third part of the maxillary artery, maxillary nerve, pterygopalatine ganglion, then comes the meninges, जी बेटा बिल्कुल है. ओरल कैविटी भी है, ओरल कैविटी भी है. इसमें लिप्स टंग नहीं है. प्लीज, ओरल कैविटी की बाउंड्रीज है, फ्लोर है, नॉट द टंग. टंग आई विल कवर इन द नेक्स्ट सब स्टेज, क्योंकि उसके साथ मैंने हाइपोग्लॉसल नर्व करवानी है. ठीक है, ये वो पार्ट है जो मैंने कवर किया. आप नोट करें, इसमें आई बॉल नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स नहीं है, इसमें इवन इंट्राऑक्यूलर मसल्स नहीं है. ये पार्ट मैंने कवर नहीं करवाया, बट ऑल दिस इज इंक्लूडेड बेटे. टीथ इंक्लूडेड नहीं है. गम्स की नर्व सप्लाई की हद तक है, टीथ इज आर नॉट इंक्लूडेड बेटा. पढ़ लिया, अच्छी बात है, लेकिन ये डेंटिस्ट्री वालों के लिए है, टीथ नहीं. ठीक है. हाँ, गम्स की नर्व सप्लाई आपको होनी चाहिए, ओरल कैविटी के नर्व सप्लाई आनी चाहिए, फ्लोर ऑफ द माउथ का पता होना चाहिए, हाउ इज इट फॉर्म. ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. और बताइए, सिलेबस में कोई एम्बिग्विटी? नहीं बेटा, टंग नहीं है. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, टंग नहीं है. टंग नेक्स्ट में इसलिए रखी है बिकॉज टंग विल बी कवर्ड विद द 12th cranial nerve. टंग नहीं है. ठीक है. गम्स है, टीथ. गम्स और टीथ की बस आप नर्व सप्लाई याद कर लीजिए. गम्स और टीथ बेसिकली डेंटिस्ट्री वालों के लिए होता है, टंग नहीं है. आई रिपीट वंस अगेन, टंग नहीं है. ओके. और कुछ, और कोई एम्बिग्विटी? I guess not. ठीक है जी. Okay then, I wish you best of luck for your substage. I'll see you tomorrow morning for your embryology class. Kal inshallah we'll start with the next G bete. One more thing. Oh, thank you. Thank you, bete. Thank you. God bless you, my dear. Best of luck. Best of luck. Tomorrow, inshallah, we'll start with the development of head and neck, जिसको हम pharyngeal apparatus की development कहते हैं. We'll start with that, inshallah. And best of luck for your substage.